लटवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। 2 जनवरी 2024 को शिलोंग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक अभूतपूर्व घोषणा में प्रीमियम बर्ड टूर कंपनी इंडिया बर्डिंग टूर की संस्थापक गौरव कतेरिया ने अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित वन्यजीव वैज्ञानिक स्टीव और अनुभवी पेशेवर डॉक्टर अर्पित देव मुरारी के साथ मिलकर एक प्रारंभिक खोज का खुलासा किया। टाउनी ब्रेस्टेड रेन बाबलर की पहचान मेघालय के पूर्वी खासी हिल क्षेत्र में एकमात्र स्थानिक पक्षी प्रजाति के रूप में किए गए हैं। ये खोज मेघालय की पक्षी विविधता को समझने और संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण प्रगति है, जो क्षेत्र की जैव विविधता पर गहरा प्रभाव डालती है। सहयोग मत प्रयास नई ज्ञान के प्रकाश में चल रही संरक्षण पहल के महत्व को रेखांकित करता है। विशेष रूप से कतारिया ने संरक्षण पहल में स्थानीय समुदायों को शामिल करने, उनकी पक्षी और प्रकृति पर्यटन में मूल्यवान साझेदारी में बदलने में अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। यूएस स्थित स्टीव उन क्षेत्रों में बर्डिंग ट्रेल्स की स्थापना के माध्यम से पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा देने में एक प्रमुख खिलाड़ी रहा है, जहां कम ही लोग जाते हैं। भारतीय साझेदारों के साथ उनका सहयोग हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से मेघालय में रहनी पक्षी पर्यटन में विस्तृत हुआ है। वन्यजीव विज्ञान और डॉक्टरेट की उपलब्धि प्राप्त डॉक्टर देव मुरारी की स्रोत रणनीतिक संरक्षण योजना को सुविधाजनक बनाने, जलवायु परिवर्तन की जवाब में एवियन वितरण परिवर्तनों का पूर्व अनुमान लगाने के लिए बिग डाटा कंप्यूटिंग उपयोग करता है। So that is actually like when talk about bird watching tours, people from all around the world or India would like, it's always their target to find rare species and difficult species. And if you're talking about Tawny breasted Wren Babbler, that is completely endemic to Meghalaya. Means nowhere else in the world you can see that bird. As a pastime or a hobby, bird watching or birding is just growing exponentially around the world. It's the fastest growing hobby in the world today. And so I think getting ahead of the curve and, kind of taking on board that you have a very special bird here, the potential for bird watching groups and individuals, and especially bird photographers coming out here, is huge. For Meghalaya, from visiting birders and everyone, there are only around 600 people who have reported birds from Meghalaya. Right? Almost around 425 around number of the bird found in Meghalaya. Only 600 people have seen, and that's also a couple of hotspots. Like it could be Sohra, it could be Balikukram or Nokre, and 5-10 checklist. I mean, only few people comes here. So there is virtually no data available for Meghalaya. That where a birder comes and goes, because if I come down and I have to go for like 3 days or 5 days for one single bird, it's become costly already. Secondly, my PhD is I worked on the climate change impact on the bird distribution, that how climate change will suffer the bird patterns. So what's happening here, and particularly on the edge or the near border states, many species which is occurring on Burma or other states, other countries, will start moving northward. That is the global phenomena happening, that most of the species from this, it's going northward or more cooler areas. So this area might receive some new species which were never occurred in India. So that also becomes more of a tourism point of view, to look at that how those places are surveyed and conserved with the help of local communities, because their circuits or their trails and their knowledge can easily be, like I was talking to Alan, I mean almost all birds have a local name. They might know the English name or something, but with a training and support on birding side, it can be worked out easily. लटवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।